Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the book back exercise for the lesson Hum Sab Suman Ek Upuvan Ke lesson number 1 class 7 from the book Vani Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. अब कुछ भाषा की बातें। समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर लिखने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। सो वी हैव टू शॉर्टन एंड राइट वेयर द टू और टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर एंड दैट प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग ऑफ मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड समास। सो वी आर ब्रीफिंग इट। सो समास रचना के दो पद होते हैं। देयर आर टू पद। फर्स्ट वन इज पूर्व पद एंड द नेक्स्ट वन इज उत्तर पद। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। सो हियर राजा का पुत्र, यू आर जस्ट राइटिंग इन अ स्मॉलर वे, राइट, बाय जॉइनिंग दिस राजा एंड पुत्र, रिमूविंग दिस केस हियर का। सो राजा का पुत्र राजपुत्र। सो दिस राज इज द फर्स्ट वन, पूर्व पद, एंड पुत्र इज द उत्तर पद, द सेकेंड वर्ड. So we are joining these two words and making a briefing. So we are reducing the words by removing the cases, unwanted details and joining the words. When we are joining, we have to follow few rules. Here Aki Matra is removed. So we have to remember few rules when we are doing the samas. So samas is basically the briefing where we are reducing the words and we give more details in that. दिए गए उदाहरण के अनुसार समासिक पद लिखे. सो वी हैव टू राइट ए समासिक पद. वी हैव टू रिमूव द अनवांटेड वर्ड्स एंड वी हैव टू जॉइन टुगेदर टू मेक द ब्रीफ. सी घोड़े का सवार. सो द पर्सन हु राइड्स द हॉर्स, द राइडर ऑन द हॉर्स. सो यू कैन शॉर्टन एज गुड सवार इज हॉर्समैन. रसोई का घर, द हाउस विच इज मेड फॉर cooking, रसोईघर. So you have to remove this ka and write रसोईघर. रसोईघर is the kitchen. तीन फलों का समूह, a group of three fruits. त्रिफला, three is the word for तीन. तीन फलों का समूह is त्रिफला. तीन is three, so we are writing त्रिफला, त्रिफला. गंगा का जल, so the water of Ganges river, गंगा जल, गंगा जल. So just remove का, गंगा जल. चार राहों का समूह, चार राहों में where the four roads meet, चार राहों का समूह. So we have चार, we can write चौ. राहा is path, the four path, that means चौ राहा. चौ is four, राहा is the path, चौ राहा. देश में रहने वाला, the person who lives in the country, देशवासी, देशवासी. The वासी is the person who is living. Citizen, रहने वाला is short form is वासी. So देशवासी who lives in the country. So check your answers here. दिए गए वाक्यों के वचन बदल कर लिखिए. You have to change the वचन. वचन is the number, singular to plural or plural to singular. लड़की गाना गा रही है. So when you are changing the noun from singular to plural, the kriya will also change. This you have to remember. लड़की गाना गा रही है. ये लड़की is a singular, so kriya is है. When you are changing to the plural form, लड़की will become the rule, लड़कियाँ. So this rule is here followed. E la mudida. So E or E, the rule is iya. You have to make a choti ki matra and put ya. लड़कियाँ गाना गा रही. Now है will become है. Dot we can, okay, they are changing the verb also accordingly. So when the singular is changed to plural form, the verb will also change here to plural form. So लड़कियाँ गाना गा रही हैं. फूल से माला बनाओ. So फूल से, using the flowers, make the garland. Here फूल is, you have to make फूलों. फूलों से माला बनाओ. With the flowers you make the garland. क्यारी में पानी डालो. क्यारी, the flower bed, you have to pour water in the क्यारी. So the क्यारी will become क्यारियों. So why I am not writing क्यारियाँ here? After the noun there is a कारक symbol. So if you see this, so you have to follow.
when there is a after the noun, this is the noun. After the noun, whenever there is a karak symbol next to that, you should use this rule. The a, u or u ending words will become o, and e or e ending words will become yo. So now this is kyari e. So you have to follow this rule. So kyariyon. So kyariyon में पानी डालो. Pour water in the flower beds. If we observe the second one, foolon se. The fool is the noun. அதுக்கப்புறம் karak symbol se இருக்கு. We are using the on rule, making fool to be foolon. And the third one like kyari is there, which is ending with e or e, and the plural form we are making as kyariyon because next to that there is a karak symbol. महिलाएं पौधे लगाती हैं. So महिलाएं is a plural form. So verb is also in the plural form. When you are changing to singular form, महिलाएं will become महिला पौधे लगाती है. You have to write not dot. Okay, this dot you should remove. See here mahila is the singular word, but this is a feminine. So for this, when you are making as a plural form, you should just append a. That's what we are getting. Mahila, mahilaye. So which is a striling shabd irundhathu, ending la a irundhathu. What we have to do, just append a. This rule only you have to remember. So when you are doing the singular form, you just have to remove this and make as a singular word. मैं कल बाजार गई थी. I went to market yesterday. So here मैं first person singular, we have to make the first person plural form, that is हम, we. हम कल बाजार गई थी is not singular now, it's गए थे. This is the plural form. When the subject changes to plural form, the verb also changes here. Gaiti is for a singular feminine. Here in hum, we don't know whether it's a feminine or mix of feminine and masculine. So we're changing to gayete. Okay, gaiti ezhudakudadu, gayete nu ezhudano. So check your answers here. So when you are changing the subject, you have to change the verb also. So you have to remember this one. When you are changing the subject, you have to change the verb also, and when there is a karak chin next to this, you have to use the o ya yo rule for making the plural form. कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए. पुनरुक्त शब्द is the word pair where the word same word is repeated, like धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ, नहीं नहीं. So the words are repeated. So similarly you have to pick and write the repeated word pair. So you can pick jhool jhool, alag alag, rang rang, has has, kyari kyari. So you can write this पुनरुक्त शब्द युग्म which I have showed in the poem. दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए. पर्यायवाची शब्द is the words which are same meaning but the words will be different. उपवन is garden, सूरज is sun, चांद is moon, Dharati is earth, Jal is water, Baura is the bee. So you have to write the two Paryavachi words for this. So, Upuvan, Bagh, Udyan, Suraj, Surya, Dinkar, Bhaskar, Chand, Shashi, Chandrama, Dharati, earth, Dara, Prithvi, Jal, Neer, Pani, Vari, Baura, Milinth, Brahmar. मिलिंद ब्रह्मर के समानता के महत्व को समझाते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए. सो यू हैव टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी. सो व्हेन यू आर राइटिंग ए लेटर टू योर फ्रेंड, व्हाट लेटर इट इज? इट्स एन इनफॉर्मल लेटर. सो व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर? I'll give in the link in the description box. You can go and check that small video which gives the details how you have to write an informal letter. So go and get those details, then come to this worksheet so that you will understand how you have to address a elder person, how you have to address a same age person, how you have to greet someone, how we have to end the letter. Just go and visit that video and come back to get the details of the format of how the informal letter has to be. To be brief enough, I'll just give, you have to write the sender's address here.
then you have to put a date, then you have to say to whom you are addressing the letter. Addressing the letter is for whom, and how you have to greet the reader. So there are three different ways, if it's elder person, younger person, or the same age person, how we have to address and how we have to greet. So that video if you watch, that will give you more details for you. Then you have to write the first paragraph giving your well-being and asking their well-being, and the next 2 or 3 sentences you can write, or 4 sentences also you can write, Samanta ke mahatva, the importance of equality. Then at the end you can write conveying the regards to the family members of the reader, and with the relationship which you have with the reader, you have to write with the relationship, and at bottom you have to write the name. This is how the format will be for the informal letter. So just check here, you can write the address Sundar Nagar so that you don't make any spelling mistakes, Delhi, and write the pin code correctly. Okay, and Dinak is the date when you are writing the exam. Right, you have to addressing your friend, so Priya Mitra Ram, Sir Prem Namaste. This is how you have to greet, with lot of love, Namaste. Then you have to say, I got your letter, I reread it, I liked it, how are you, and I'm doing fine. This introduction you have to give in the first 2 lines. तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम्हारा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य समान हैं. So you are not willing to accept the fact that all the people are living in the earth are same. So after reading this, I was able to understand this. मित्र, ईश्वर ने धरती पर सभी मनुष्यों को समान महत्व का बनाया है. So in the God has created each and every human in this earth in an equal way only. ईश्वर ने इस धरती पर पैदा होने वाले सभी लोगों को एक जैसे सुविधाएं प्रदान की एंड गिवन द सेम एनवायरनमेंट, कंफर्ट जोन टू एवरीवन, राइट. The nature is providing the same thing to everyone. इसलिए सभी मनुष्य समान हैं. Each and every human are equal. They are the equality that is existing from the nature itself. समानता का व्यवहार से, when we are showing the equality, we will can share the love and affection, right. प्रेम और परस्पर आत्मीयता की भावना का विकास होता है. This gets developed. में शांति की स्थापना होती है, and the society will have the peace. अगर समाज में शांति, प्रेम और आत्मीयता को चाहते हो तो सबके साथ समानता का व्यवहार ज़रूरी है. एंड इफ़ यू नीड ऑल दिस थिंग्स, यू हैव टू बिहेव इन द सेम वे, शो द इक्वालिटी टू एवरीवन. सो शेष मिलने पर इस विषय में चर्चा करेंगे. द रेस्ट व्हेन वी मीट विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. अंकल आंटी को चरण वंदना. सो गिव्स कन्वे माय रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी. तुम्हारा प्रिय मित्र, रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड, यू हैव टू राइट योर नेम. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट ए लेटर. सो आओ कुछ नया करें, जिस विल जस्ट डिस्कस. एकता में बल पर आधारित कोई कहानी लिखे. यू हैव टू राइट ए स्टोरी बेस्ड अपॉन द यूनिटी, द पावर ऑफ यूनिटी. पेड़ पौधों व फूलों के संरक्षण पर कुछ पंक्तियां अपने शब्दों में लिखे. सो टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड ट्रीज ऑफ फ्लावर्स, यू हैव टू राइट सम स्लोगन और द सेंटेंसेस. कुछ फूलों के चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपका कर उनके नाम लिखे. यू कैन राइट ए, यू कैन ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स इन योर क्लास वर्क नोट एंड यू कैन राइट द नेम्स. अगर फूल बोलने लगे तो क्या होगा? इफ़ द फ्लावर्स आर टॉकिंग देन व्हाट दे विल टॉक, यू हैव टू गेस देन राइट इन पैराग्राफ. अनुमान और कल्पना के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए. सो यू कैन थिंक एंड राइट इफ द फ्लावर्स आर टॉकिंग व्हाट दे विल टॉक. फूलों को देखकर और सूंघकर आपको कैसा महसूस होता है? सो आफ्टर सीइंग द फ्लावर्स और आफ्टर स्मेलिंग द फ्लावर्स, व्हाट फील यू गेट? अपने मित्र के संग चर्चा करें. यू कैन डिस्कस विथ योर फ्रेंड. There is a few details which I can give for the activities. This is how we have to approach the questions. You can take a snapshot if you want. So how you can help the plants, trees and flowers. You can take a snapshot if you want. And if in writing, if the flowers wants to convey, then you can see write like this. So they want to convey that we are spreading the fragrance in the environment. It is all given by me. We are adding the beauty to this environment. We are giving the happiness to everyone. We don't live in the thorns. We always smile. So this is what we have to learn from the flowers. विदा परिचय. सो प्रस्तुत पाठ कविता पोएम पर आधारित है. इस बेस्ड अपॉन द पोएम. कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें कवि द्वारा
रचित काव्यात्मक रचना की आकृति जिससे चंदों की पंक्तियों से विधिवत पिरोया जाता है. So based upon the poet's imagination in the stanzas are written. वह हमारे मन को छू लेती है and that touches our mind and heart. कभी कभी झकझोर देती है and it also gives the heart message for us. It moves ourself emotionally, right? कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है, कविता में भावों एवं कल्पना की प्रधानता होती है. Things are expressed in a poetic way. It has the feelings, it has the expressions, it has the music, it has the imagination power. Everything is there in the genre. प्रेरणादायक भारत, इंस्पायरिंग इंडिया. हमारे देशों में अनेक धर्म और संस्कृति के लोग सदियों से रहते आए. सो फॉर सेंचुरीज इन आवर कंट्री मेनी रिलीजियन पीपल और द कल्चरल पीपल आर लिविंग. बहुत सी बातें हमने उनसे सीखी है और बहुत सी हमारी बातों को अपना कर वे हमारे बीच हम जैसे हो गए. सो देयर आर people who have changed after hearing or after seeing this, right? We have learned many things. We have shared things among ourselves. हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए. We have to live together. हम सबको एक बगीचे के रंग बिरंगे फूलों की शोभा समझना चाहिए. We have to think as the poet feels here, like we are different flowers of the garden adds beauty. We also have to add beauty in this earth. भारत में प्रायः भिन्न भिन्न धर्मों, बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, रहन सहन, पहनावा, खानपान आदि का भेदभाव देखा जाता है. सो इन इंडिया वी हैव डिफरेंस इन द रिलीजियन, डिफरेंस इन द लैंग्वेजेस, डिफरेंस इन द बोलियां. बोलियां इज द स्पीकिंग लैंग्वेज दैट इज restricted to particular area only, like Rajasthani, Bhojpuri. Okay, भाषा like Hindi, English, French, which is wide over. The area is spread across. Sanskrit is culture, रहन सहन the living lifestyle, पहनावा is the dress costumes, खान पान is the food items. So though we have all these differences, इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम सब एक ही उपवन भारत के फूल हैं. We all belong to the same country, India. Though we have so much of differences. अनेकता में एकता ही हम सब भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता है. And the greatness that we have in Indians are the unity in diversity. Hope you would have understood the book back exercise. If you have any doubt or clarification, please put in the comment section. Surely reply back. Thank you, students.